Today we were just having this introductory session and we will go on from here. For the next class, when I have the next class with you, let me just give you one assignment. Yeah, when I said assignment, some of you said, huh? Some of you said yes. Okay, very simple. This assignment will cost you 200 rupees. Listen, just listen, okay? मेरे लिए कुछ नहीं लाना. Okay? Yeah, it's not like that, okay? So the assignment is actually you are going to buy something worth 100 rupees. One item which is going to cost you 100 rupees exactly. Not less, not more. Okay, you can add like 4 markers. For example, right? Something that costs exactly 100 rupees. Okay, along with that, you will bring a note of 100 rupees. Right? 200 rupeya te athi lag gaya. Yeah, something like that. But let me tell you why are we doing this and what are we doing. You will buy something which is worth 100 rupees and you're going to bring 100 rupees note as well. Right? Now what you do, for example, you bring markers, 4 markers. I will invite you here one by one. Yeah, minu samajh aa gayi. Okay, yeah. So you will come over here and say, good evening, ladies and gentlemen. My name is Asad Yaqub and today I have brought something amazing for you. And that amazing thing is a set of markers. These markers are really wonderful. You know, educated people should always have pen, pencils and all that. And if you want to highlight your point, you should have the markers. And then you will just use the skills of a salesman. Okay? In English. Yeah, you say, if you buy these markers from the market, they will cost you 200 rupees. But over here, for the publicity of the company, 100, 100, 100. I am coming. Okay? Now salesman idhar aa gaya. उनको लग रहा है यहाँ पे कोई खरीद रहा है, कोई नहीं खरीद रहा. Okay, and then salesman goes back and says, okay, और किसे पर आनु चाहिदा होए थे, anything like that. You got my point? Yes, sir. You know, selling, not the products even, selling is very important. So you will bring, मैं भी 100 रुपए के नोट लेके आऊँगा. अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहले खरीद लेनी है. Okay, now you have to be creative. Just be creative. Not that मैं 2 किलो आटा ले आवांगा. Not like that. I mean, your approach should be different. Your thoughts should be different. Be creative. I mean, let me tell you, this is a very creative activity. Through this activity, I will read your mind. I will see what you bring. And if you bring something and someone says, मुझे दे दो 100 रुपए का. And one more thing, it should not be a loss situation that you say, okay, मैं 300 वाली चीज़ 100 में दूंगा. सारे खरीदेंगे, मेरी शाबाश हो जाएगी and all that. Not like that. Okay, the thing should cost 100 rupees and then you will come over here, you will give 1 minute demonstration. 1 minute demonstration in English. Yeah, the purpose is actually that. And you will bring 100 rupees also and I make sure कि जो product आप लाएंगे वो कोई ना कोई ज़रूर खरीदेगा. नहीं खरीदेगा तो मैंने दे देना, मैं खरीद लूँगा. पैसे दे के लूँगा, okay? Yeah, exactly. But you have to be open. When they say this is the product, who wants to buy? One should say, okay, here you go 100 rupees and I will buy it. So this is for the next week, next session, whenever we have the session and all that. Should it be only one thing? One thing, or it can be a group of things which cost 100 rupees. I mean the range is 100. So किसी का नुकसान नहीं करना. मैंने 100 रुपया देता 40 रुपए दे आ जाते. Not like that. Okay, किसी का नुकसान नहीं करना. और किसी को फायदा भी नहीं देना, right? So this thing will teach you how to do marketing and you should prepare it. You should prepare it, give some examples. Look at this, they are very colorful and this and that and all that. Okay, bring something. I mean, again, I'm telling you, it's all creative. You just need to think, okay, what should I bring? And then bring something and I will read your mind also from this activity. Clear? Very good. Happy? Yeah? Very happy. Very happy, माशाल्लाह माशाल्लाह. क्यों ओए जज खलो जा तो मुनाफा ले सकते हैं. अभी मुनाफा नहीं लेना, अभी मुनाफे का टाइम नहीं आया, ठीक है? 1 सेकंड, 10 रुपए मैं दे दूंगा. Don't worry. अभी मुनाफा नहीं लेना, अभी you are learning. अभी क्या बोलते हैं, चट्टी
हट्टी, and then you get profit. अभी वो profit की तरफ मत जाएं, ठीक है? I'll tell you something strange. When I started my teaching career, first month, I went to a local academy. I taught English language, spoken English. He did not give me any salary. He said, पहले महीने की नहीं होती, अजय तू कम सीखता है. He said that. Second month, I taught the students, 5, 6, 7 students. By the end of the month, मुझे तो salary मांगते हुए शर्म आती थी. You know, sometimes you are like, मैं नहीं पैसे मांगने. I don't want to do it. But still, somehow, I had a friend who said, you know, sometimes you have friends, they say, तू मिन्नू ना लेके जाएं. He said, तू मुझे लेके जाना. मैं कहूँगा कि इस बेचारे को 2 महीने से आ रहा है, पैसे नहीं दे रहे, something like that. But anyways, I demanded my salary. So the first salary that I received from teaching, that was 300 rupees. And I put the money in my pocket, you know, I was holding 300 in my pocket, and I was like, oh God, I got some money. I gave some money to my mother, I gave some money to my brother and all that. और ये मैं 1947 का बाबा नहीं हूँ. Okay, don't think like that. अच्छा सर आपके दौर में होता होगा. ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 की. अभी जो 2000 गुजरा है ना, 20 साल पहले, 21 साल पहले, उसकी. So I started from there, and then जो मैं 1 महीने में अर्न करता था, बहुत मेहनत करके सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक, अब वो 1 घंटे में कर लेता हूँ. I'm just telling you, शेखियाँ नहीं मार रहा, ठीक है? I'm just telling you, when you grow in your profession, when you grow in your career, in the beginning, effort is this much, reward is 300 रुपया. इतनी मेहनत करता था, हर लेक्चर तैयार करता था. उस वक्त कंप्यूटर भी इतना आम नहीं था. कार्ड पे ना वो चार्ट पेपर होता है, काट के तस्वीरें लगा के बच्चों से स्पीकिंग करवाता था, एंड ऑल दैट. सो रिवॉर्ड वाज दिस मच, एफर्ट वाज दिस मच, एंड नाउ टुडे एफर्ट इज दिस मच. हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू फील सर्दियों की एक रात में कंबल में बैठ के, गाँव तकिए से टेक लगा के, गोद में लैपटॉप रख के ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं? हाउ वुड यू फील? अमेजिंग. या यू आर एट होम, चाय भी साथ रख ली, कंबल भी ले लिया ऊपर, टेक लगा के बैठे, की कर रहा है? क्लास पढ़ा रहा है. क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है. सो एफर्ट इज दिस मच, एंड माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह रिवॉर्ड इज दिस मच. दिस विल ऑल हैपन विद यू. आप लोग बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, 10 साल बाद बताएंगे. और टीचर्स होते हैं जिनको इंसान बता देता है, बाकियों को नहीं बताते. मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना अपनी फैमिली में, मेरी मिसेज मुझे घूर के देखती है, तुसी ना दस्या करो, नजर लग जाती है. लग भी जाती है. ओके, बट इंशाल्लाह, मतलब जैसे मैं अगर 300 से यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, आप मुझसे लाइक लोग हैं. अगर मैं आपको अपनी तारीख बताऊँ, अपनी अम्मी को यहाँ पे लेके आऊँ, वो बताएंगे थे स्कूल नहीं जाता हुंदा सी. आई वॉज लाइक दैट. Someday we'll talk about it. Okay, so let me tell you, your present is not your future. Number 1. Number 2, you have not seen your future. आज मैं जो हूँ, 20 साल पहले मुझे कोई आके बताता ना कि असद याकूब 2001 है, ये 2021 में तू ये करेगा, मैं कहता तेरा दिमाग खराब, तू पागल है, मेरे ना माहौल करना है पागल, तेरा दिमाग खराब है, ये हो सकता है कभी? आई कुडंट बिलीव इट. अब जो मेरी रियलिटी बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह. एक वो दौर था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था. सो इंशाल्लाह दिस विल हैपन विद यू. मेरे ऊपर कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, ये सबके साथ होगा इंशाल्लाह. नीयत साफ होनी चाहिए, मेहनत करें, और फिर आप लोग बताएंगे, इंशाल्लाह आप लोग बताएंगे. ठीक है, थैंक यू. मैं ज्यादा इमोशनल हो गई. ओके, वापस आते हैं. ठीक है, हमारा जो भी टेम्पो सेट हो गया ना, ये हंसने हंसाने वाला, हमने इस पे चलना है. ठीक है यार, ज्यादा वो नहीं करना. नाउ लेट्स गो ऑन. नेक्स्ट जेंटलमैन प्लीज. Assalamu alaikum everyone. Myself Muhammad Athar from Aribala. I am doing my bachelor's in political science from GCU Lahore. Today I will tell you about my daily routine. I just woke up around at 10 a.m. Then I just, the first thing I do is to pick my phone and check all the notifications and my daily task routine. And then I just get ready for the university, take some classes, and come back around 4 or 5 p.m. Then I take a shower and make squash, drink it, then do some rest, and then I just sit at my workstation and spend and stay there till late night. In between, I just... Okay, that's very good. You know, the thing is, in a very short time, very briefly, you narrated so many things. So this is a very positive thing. Keep it up like this, yeah? अगले project में आपकी चीजें बिकेंगी. Okay, yeah. और ये ना कहीं एक चीज लानी है, ठीक है? ये ना कहीं बाहर डब्बा रखे है.
पुरानी चीजें सारी इधर निकाल जाए अपनी, एक आइटम लानी है सिर्फ। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वो डब्बा नहीं लेके आ रहा जी, वायर पता चले रिक्शे खड़े हैं, डब्बा ऑनलाइन बेच देंगे। नेक्स्ट प्लीज। ऑल डन? कोई रह तो नहीं गया? ये कहीं मैं तुम्हें कवर करूंगी। नेक्स्ट प्लीज। देयर आप आ जाए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Well, I am Abdul Jalil and I am pursuing my BSc in Chemical Engineering from University of Engineering and Technology, Lahore. Here I am going to share my daily routine. I usually wake up something around 5 to 6, and then after having some lunch, I move towards uni. Actually, this is our psychomotor performance week, and we have a final on this Friday, so we have such tight and packed schedule. After uni, I moved towards home around 5:15 or 5:30. I come back home, and after having lunch, and I'd move towards some rest, and around 7 a.m. or 7 p.m. sorry. Okay, that's good. Very nice. अच्छा एक चीज you spoke well. Overall, it was good. Just try to look more confident. ठीक है, अभी बेहतर है अभी के लिए। एक चीज और बताऊं, यहाँ का कोई भी होमवर्क, कोई भी असाइनमेंट अपने नर्व्स पे नहीं लेनी, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बड़ा ढेर है करने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई कहता है ये असाइनमेंट कैंसिल कर दूं तो कैंसिल भी कर देते हैं। हाँ देखन दे ठहर जा। जिसने कहना था ना नो सर, जिसने कहना था यस सर, उसकी 3 कर देनी थी मैंने को। थोड़ा अभी तक आप लोग मुझे समझ नहीं पाए। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे। जो कहेगा ना ठीक है सर कैंसिल कर दें, उसको 3-4 असाइनमेंट इकट्ठी दूंगा। तो यहाँ का कोई भी काम नर्व्स पे नहीं लेना। देखिए 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, आते जाते इधर उधर देखते हुए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ना मिला तो टमाटर ले आना, उसमें भी अच्छी प्रेजेंटेशन बिकेंगे नहीं, ये मैं बता दूं। हाँ, तो आम भी, हाँ एग्जैक्टली, यू जस्ट सी दैट। ठीक है, एग्जैक्टली। सो यू शुड कम अप विद द आइडिया। आपने ये देखना है कि कम्युनिटी क्या है, ऑडियंस क्या है, क्या चीज है जो ये लोग खरीद लेंगे। एग्जैक्टली, ये क्रिएटिविटी है। ओवरऑल इट्स वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू। नेक्स्ट वन प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdul Rahman and I am from Narang Mandi, district Shekhupura. I am doing my BS Polymer Engineering from UET Lahore. I am here to tell you about my daily routine. Nowadays I am having psychomotor labs in my university, so I have to wake up early in the morning around 6:30 a.m. After that I take a quick bath, and after that I have a breakfast and go to university. Then I use my mobile before my lab, and from 9 to 4 p.m. I continuously in my lab and tirelessly do work. After that I come back my home. Okay, this is all very good. Yeah, Narang Mandi is famous for rice. Yes, sir. Yeah, you belong to Narang Mandi, the city or like area and etc. Okay, this is very good. So be more confident. You know, अगली दफ़ा से ना हम एक चीज़ और भी करेंगे। आपने जब आना है यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, your dressing will matter. अब ड्रेसिंग ये नहीं है मैं पार्लर से तैयार हो गया, not like that. Professional presentable dressing. Okay, and you know what is professional presentable dress. कुछ भी खरीदना नहीं है, राइट? जो है उन्हीं में से अच्छा मुझे पता है। मैं जब जहाँ पे जाता हूँ उस लिहाज से वहाँ के कपड़े जो है आई हैव देम एंड आई जस्ट वेयर देम। सो जस्ट बी प्रेजेंटेबल, देन इट विल बी फाइन। ठीक है, ये तरले वाला मुंह क्यों बनाया हुआ है? सही करें इसको, यू नो तरले वाला। गुड जॉब, एक्सीलेंट। नेक्स्ट वन प्लीज। Respected sir, ma'am and my dear friends, Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman. I belong to Shekhupura, and currently I am doing MSc in Communication Studies. So today I will tell you about my daily routine. Because of summer vacations, it is just changed now. I wake up early in the morning, and I offer my prayer. After that, I go to morning walk, and on my return, I go to bed again because I sleep late at night. So I wake up at 10 or 11 a.m. and I use my mobile, and after that I have my breakfast, and after my breakfast Okay, I use my that's mobile. very good. Overall it's all very well, but try to, you know, your radius is this. I mean from there to there and then a circle over there. So try to look at everyone. Okay, that will be better. But anyways, overall it's good. Keep it up. Thank you. Next one, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I hope you are all doing well. It's me, Muhammad Umar. I am from Lahore, Pakistan.
Currently I am doing engineering from UET Lahore. I wake up at around in between 7 to 7:30 I a.m. wake up between 7 to 7:30 a.m. I I wake- wake up between. I wake up between 7 to 7:30 a.m. Then I then I have my shower. After that, after this, I have my breakfast, and then I will go then I go for my to university. There from 9 to 4 p.m. I am busy in doing labs, and after labs I go home back. I go back home. Okay. Over नाक नहीं पकड़नी. Audience के सामने कान नहीं, नाक नहीं फड़नी. Yeah, exactly. Even कुछ भी हो, पता नहीं की लड़न दे हंसी. But don't do that in front of the audience, okay? Because you know, audience monitors you. Whenever you are here, I've noticed one thing. एक साहब का मैं नोट कर रहा था कितनी दफ़ा नाक को हाथ लगाते हैं. At the end मैंने बताया भाई 25 दफ़ा आपने नाक पकड़ी थी. And उसने वाकई 25 ये this is a habitual thing. So try to avoid all these things. अभी आप नाक पकड़ेंगे बाद में कहा अच्छा जी सलाम अलैकुम. Yeah. So you should avoid anything like you know touching your ear, right, or fondling with your nose and all that. इसको ये because you know they monitor you. और ये जो भी आप skills सीख रहे हैं they will help you with your job interviews as well. आप लोगों ने बड़ी-बड़ी कंपनीज को जॉब इंटरव्यूज देने हैं और फिर बड़ी-बड़ी कंपनीज की तरफ से जॉब इंटरव्यू लेने भी हैं इंशाल्लाह ठीक है बनानी भी हैं वही तो कह रहा हूं बड़ी-बड़ी कंपनीज की तरफ से जॉब इंटरव्यूज करने हैं आपने ठीक है सो थिंग्स विल बी फाइन एक्सीलेंट गुड जॉब नेक्स्ट वन प्लीज Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. My name is Ahmed Hassan. I belong to Lahore. Currently, I am studying at UET Lahore in mining department. Now I'm going to tell you about my daily routine. I wake up around at 1 p.m. I take shower and then offer my Zohar prayer. Then I take my lunch, and after that I go to playground for playing cricket. I come back from there at around 7 p.m. I offer my Maghrib prayer. Then due to vacations from university, nowadays I am free and I am learning online business skills. Then I go to bed. Okay, that's good. Just you need to focus your fluency. थोड़ा सा आप सोच के बोलते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे it will be better, right? Overall it's good, but just there's a break after every sentence. उस break को तोड़ें. Okay, good job. Thank you. Next one, please. My name is Hikmatullah. I belong to from Quetta. I'm the student of history. I'm the student of history department from the Government College University. Today I will share my daily routines. I wake up early in the mornings and offer prayers and recite the Holy Qurans. And I go to morning walks. And I come back and I have lunch. Then I go to university and taking my classes regularly. Then I go to libraries and reading books. Which is related to the history and motivational books. Then I came back to hostels and taking some rest. And finally, I go to bed at 7 o'clock. Okay, how many languages do you speak? Sir, 2, 3, sir. Which third language? Sir, Pashto or Urdu. Little bit the English, sir. Do you speak good English? You don't speak any Persian because people who live in Quetta, they speak Persian. I was born in Quetta. My mother belongs to Quetta actually. That's good, very nice. So overall it's all very good. There were some grammatical mistakes, but you can improve them as well, right? You have the potential, good job, excellent. Next one please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Muhammad Bais and I'm doing mining engineering from UET Lahore. Usually I woke up early in the morning. Usually I wake up early in the morning and offers my Fajr Salah. And then after when I'm done with my Salah, I usually now sleeps for about 2 to 3 hours. Not sleeps, I sleep. I sleep for 2 to 3 hours. And then nowadays the university is closed. So I'm free and I spend my time in doing art because this is my hobby and I love to do drawing things. Okay. And then as usual I offered all of my prayers and eat and then. Okay, that's good. So overall it's all very well. Just try to be a little more energetic, then it'll be fine. ये ढीला होके नहीं बोलना, active होके बोलना, ठीक है? Good job. Well done. Next one please. This is Hassan Mahmood and I'm from Jehlam and I'm a student of UET doing my BSc in mining engineering.
and I'm gonna tell you about my daily routine. First, I wake up with the thunder voice of my roommate Hassan, wake up and offer your prayer, and then I dress up and for going for breakfast with my friends, and then doing usually quotidian routines like studies, exam preparation, and then इशारा चेक करें बच्चे का, देन आई है, सी बॉडी लैंग्वेज, ओके, ओवरऑल वेरी गुड, बट थोड़ा ये जो है ना ये, देन आई, ऑलराइट, गुड जॉब, थैंक यू। एटलीस्ट पता है क्या है, एक तो लर्निंग वो है जो हम कर रहे हैं, एक वो है जो आप यहाँ पे आने वाले हर बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, किसकी क्या चीज़ अच्छी लगी। मैंने एक चीज़ सीखी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आई लर्न पर्शियन, आई लर्न फ्रेंच, आई लर्न स्पेनिश लैंग्वेज, राइट, उसके बाद आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, और जो मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे एंड ऑल द टीचर्स दे टॉट मी, व्हेन आई बिकेम अ टीचर आई जस्ट कॉपीड देयर स्टाइल। कभी एक टीचर का स्टाइल कॉपी कर रहा, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का, कभी चौथे का, जिसमें जो चीज़ अच्छी लगती थी। सो दैट्स व्हाट यू गाइज हैव टू डू। जितने भी लोग यहाँ पे आ गए, जिसका जो चीज़ अच्छी लगती, किसी के बाल अच्छे लगे, कल से मैं भी ऑयल लगा के आऊंगी, समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट कॉपी समथिंग फ्रॉम अदर्स जो आपको लगता है कि सबको पसंद आया। सो दिस इज हाउ थ्रू ऑब्जर्वेशन you can learn things from others, and this is going to be very good learning. Passive learning, खामोशी से बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं। Like I learned several things on Friday from Friday prayers के जो खुतबा देने वाले थे, कितनी अच्छी उन्होंने तकरीर की, कितना अच्छा उनका अंदाज़े बयां था, ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए। So always observe and absorb, जो observe करते हैं वो खुद ही absorb हो जाता है, और जो absorb हो जाता है उसने फिर कहीं ना कहीं निकलना तो है ना, तो you can just take it out. Next one please. Assalamu alaikum. My name is Asif Khan. I am from Lahore. I am currently doing engineering from UT Lahore. I just completed my semester. So I am not early waker like you. I wake up at noon. Then I take my brunch. After brunch, I offer my namaz-e-zohar. And after, I am also doing graphic designing. So I take classes of graphic designing from 2 p.m. to 4 p.m. And after this, I tuition my siblings. I get myself free at 7 p.m. And I'm also a social media person, so I active all the night. Okay, this is very good. Listen, you used very good vocabulary, right? Sibling and tuition my sibling and all that. So just keep it up and further develop your skills. And by the way, you are social media person. Now, like you know, there are two social media people. बात को समझिएगा, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो नीचे करते करते लाइक 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 लाइक, और एक वो होते हैं जिनके ऊपर लाइक आता है। ठीक है, अब आपने ये फैसला खुद करना है कि मैं लाइक 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 वाला बनना है, या मेरे ऊपर लाइक्स आए, मेरे ऊपर व्यूज आए। ये जो दूसरी बात है ना कि मेरे ऊपर लाइक्स आए, ये करके दिखाना है। वरना ये नहीं मुंडा की करता है, मुंडा 3 रुपए से 700 मैसेज करता है, नॉट लाइक दैट। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि आप कुछ करें क्रिएटिव, और उसके ऊपर व्यूज आए, उसके ऊपर लाइक्स आए, लोगों की लर्निंग हो। वो सोशल मीडिया हमने आपसे लेना है। ठीक है, थैंक यू, गुड जॉब, एक्सीलेंट। नेक्स्ट वन। Assalamu alaikum. My name is Ariz Hassan and I belong to Chakwal. Good. Talking about daily routine, there's a difference, as you all very much familiar with the routine of hostel life. In home, there's a special person who comes to us and she shrieks, "Come on, wake up!" She shouts. She shouts. And in hostel, while my classmates are also my roommates. Okay. Thanks to them, they usually shout, "Uth ja, time ho gaya class ka." Okay. Then I used to say that, "Uth raha hu 5 minute bas." And after that, I usually go to take shower. After taking shower, we done our breakfast and go to class in our daily routine. ओके, वो भाई के मुंह पे क्वेश्चन मार्क है। पता है क्या पूछना चाह रहा है? ये कौन सा हॉस्टल है जहाँ पे शी शाउट्स? हाँ, सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली ही शाउट्स। ये ऑलराइट, ये सब प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं है, सब नेचुरली हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लीज, गुड जॉब।
Assalamu alaikum all. Walaikum assalam. This is Luqman Khan and I belong to South Waziristan tribal districts from KPK. I am a student of chemical engineering from UET Lahore, and nowadays as my university is closed, so I used to sleep more and studying less. So I start my day before 12 o'clock. After taking a shower, then I go for breakfast, and after praying a Zohar prayer, I take a lunch and have a little bit chat with my families. Then at noon, right after Namaz Asar, I go for sports, playing cricket, and after playing cricket, I go for a Maghrib prayer, and at night I used to watch movies, season series. That's fantastic. Stay here. The good thing is the people who are Pashto speaking, when they speak English, their accent is very good. So this is the positive thing. Like, you know, when you are going to learn English properly and you will speak, people will say he's a foreigner. Yeah, because of Pashto language, the sounds that we have in Pashto language, they are ideal to speak good English. So overall it is good. Just focus your pronunciation a little more. You'll be a good speaker, inshallah, right? Thank you. Good job. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Kashif and I belong to Balochistan, but I am living in Karachi. You belong to Balochistan? Balochistan. Balochistan. Wow, this is good. Which area? Sir, Panjgur. Excellent. Excellent. Then I'm studying in UT Lahore, and then I'm going to tell you about my daily routine. And then I get up around 8 a.m. Then I get ready for classes. Then after that, till I have classes till 12. Then after that, I have lunch. Then I have lunch. Then I go to library. After that, after library, I play football. Then playing football, we have friends gather and some play cards. All right, good. Okay, that's fine. Now, did you notice one thing? Yes. And these things happens out of confusion. When you are confused, समझ नहीं आ रहा क्या करें, हाँ? Something like that. Then we play cards. Okay. After that, नहीं निकला भी नहीं निकला. I have a lunch. Okay. All right, time's up. Listen up, listen up. I tell you. You know, it's very natural to be confused, to be nervous when you come over there. But you know, there are certain things you hide from others. Sometimes, I'm just giving you one wrong example. You're speaking lie, you're telling lie. You know what the truth is, but you are hiding the truth with the help of lie. In the same way, when you come over here, even if you are nervous, even if you are confused, manage it. Fear management is what we call confidence. If you manage your fear, right, then you will be confident, okay? So you have to do it, and don't make any gesture, anything like that shows you are afraid. Now, if I'm talking and I'm doing it like this as well, okay, then I tell you, then this again and again, this shows I'm not confident. So try not to do anything like that, and you'll be fine. Overall, you spoke. फिर देख, बाज नहीं आ रहा है, वही सिखाया सर में आइंदा नाक को हाथ नहीं लगाऊंगा. All right, करते करते वापस चलेंगे. Excellent, good job. Language अच्छी है आपकी, ठीक है? Very good. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ahmed Ali. I am from Lahore and I am doing masters in mass communication from Punjab University. I am here to tell about my daily routine. I wake up early in the morning. Wake up early in the morning for Fajr prayer. Then I take my breakfast and going for my university to take classes. Then I return back at home at 1 o'clock Okay, थोड़ा सा कॉपरेट करें ना आप भी प्लीज. थोड़ा बोलने तो सही, बाकी कॉपरेट मैं कर लूँगा. Okay, थोड़ा बोलने तो सही ना. Yeah, मुझे देख रहे हैं. Yeah. Then I spend my time. परेशान बच्चा अम्मी को नहीं देखता. अम्मी जी. Yeah. Yes, please carry on. Then I spend my time in library. To read the books. चलिए, that's very good. देखें, असल ना आज का मकसद ये था आपको यहाँ से दुनिया दिखाना. वो जो दुनिया मुझे दिखाई थी ना, उन्होंने USB दे के, मैं देखे सबके क्लिप्स, मैंने कहा ठहर जाओ जरा, पहले दिन मैं ये चीज़ तो इनकी निकालूँ, ये खत्म. My name is this and that and all that. That was not confident picture. अब at least next time ये होगा कि आप जब यहाँ आएंगे confidently आएंगे, और फिर जब एक दफ़ा और यहाँ से होके चले गए ना, तो फिर आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं है. ठीक है? और इंशाल्लाह ये तब होगा जब आप अंदर से चाहेंगे. और एक चीज़ बताऊं, कता नज़र हर चीज़ के, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स, अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है.
ठीक है, वो फिर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कुछ जो है ना डॉक्टर्स, उनको बताना पड़ता है भाई मैं डॉक्टर हाँ। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपको शक्ल से और उनकी बातों से अंदाजा होता है कि ये डॉक्टर है, ठीक है। तो ये जो स्किल्स हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर होते नहीं है पर लगते क्या हैं, डॉक्टर है, राइट। तो ये जो लगना है ना, जो आप हैं वो आप लगें भी, इस पे हमने फोकस करना है, ठीक है। तो तभी ये जब हमारे सेशन होंगे, शौक से आना है, वो वाला शौक नहीं इंग्लिश वाला शौक नहीं, उर्दू वाला शौक से आना है कि आज मैंने कुछ यहां से सीख के जाना है। और बिलीव करें जब आप यहां से वापस जाएंगे एक अच्छी फीलिंग लेके जाएंगे, ठीक है। प्लीज अभी आपने बोल बच्चे को झटका दिया है थोड़ा सा। नेक्स्ट वन प्लीज। My name is Qasim Razam and I belong to Bulewala, this is the city of education. I am studying in University of Engineering and Technology, Lahore, BSc Mining Engineering. So I am here to talk about my daily routine. First of all, I wake up around 9 or 9:30 a.m. So my first thing is to find a shampoo, and I say to Aris, shampoo kahan hai? And he doesn't reply. He usually sleeps, and then then after solving the problem of shampoo, then I take my towel and go to the washroom to take a shower after. Okay, that's fantastic. Listen please now. The first thing is put some energy in your voice, number one. Number two, when you are presenting, this is what we call in English, don't wash your dirty laundry in public. शैम्पू मिलता है नहीं मिलता है जो भी है, भाई इधर क्यों बता रहे हो? हाँ, so you should not talk things like that, okay? Anyways, thank you very much. Good job. Overall, it's fine. Next one, please. Assalamu alaikum everyone. My name is Sheroz Ali. I belong to Kumalia. I am doing mining engineering at UT Lahore. I am here to tell you about my routine life. First of all, I wake up at around 5 o'clock. I offer the Fajr prayer. Then I use my mobile phone to check the notifications, and then I dress up and take breakfast with my friends, and then I attend the class from 8 a.m. to 1 p.m. After 1 p.m. I take some rest at hostel, and then I play some activities to refresh myself, and then in the evening I offer the Okay, overall it's all very good. बस चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ठीक है? Good job, well done. Next one, please. Assalamu alaikum. My name is Zishan Zia. I am from Sahiwal. I am doing BS Mining Engineering from UT Lahore. Here I will tell you about my daily routine. My day starts at 7 o'clock. From 8 to 12, I attend online classes. From 12 to 2 p.m., I use my cell phone. And from 2 to 4, I take rest to boost myself. And from 4 to 6, I play cricket as I am an athlete. So after that, I do some assignments and notes work, and then I go to sleep. Okay, overall it's all very good. Just keep it up like this. You know, within 30 seconds, you elaborated so many things. So you know this art, okay? Just now you have to groom yourself in English. Good job, thank you. Next one. Hello everyone, my name is Muhammad Abdullah Maroof. I belong to Kashmir. I'm here to telling you my daily life routine. I daily wake up at around 7 p.m. After taking shower, I have my breakfast and getting ready for my university. Get ready for my university. At around 1 p.m. I go back home, taking some rest and having my lunch. At around 4 p.m. I go with my friends, mostly with my friends here and there to find some new stories for my YouTube channel. As you don't know, I'm running my own YouTube channel, Hamara Pakistan. Please like and subscribe also. After that, I go back home. At 7 p.m. I have my dinner. Okay. Okay, thank you very much. Hamara Pakistan. Thank you. Good job. Very nice. Next one, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Badr Munir and I am from Son Valley district, Khushab. I am doing mining engineering from UT Lahore. I am here to tell you about my daily routine. I wake up at 8 o'clock in the morning or 9 o'clock. Then I take online classes or listen to some lectures. And after that, I take lunch and take some rest. Then I go for cricket at around 4 o'clock, and then
after playing cricket, I came home and I come home and watch some movies or drama, and then I sleep. Okay, that's very good. Overall, it's nice. चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है? अब ये वाली, ये जो सेल्फी पे नहीं लेते, वो वाली. Good, excellent, very good. Next one, please. Assalamu alaikum. My name is Shan. I brought up. I was born and brought up. I was born, brought up, and educated in Lahore. Now I will tell you about my daily routine. It is not scheduled. I used to wake up early in the morning and check my WhatsApp messages, and if there is something new and important to me, and then schedule my day, whole day. And I watch my recorded lectures, because nowadays my final is coming, and I am working hard for it. And mostly from 8 to 1 p.m. Okay, overall it's all good, right? Keep it up. Okay, thank you. Good job. Very nice. Next one. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Amjad Ali. I belong to Sawat KPK. I am a student of UT Lahore Mining Department. Today about Come on. Today about my daily routine. I wake up early in the morning. I ready for the getting to university classes. I have our classes joined to 8 a.m. to 1 p.m. Today take rest in the 1 p.m. to 2 p.m. and I play cricket after that time. That's my daily routine. Okay, that's very good. Where are you from in Sawat? Khwaza Khela. Yeah, that comes on the way to Sawat. I've been there. Okay, listen, you have to be more confident. Then one day you will be making your video. What's your name? Amjad Ali. Amjad Ali. Amjad Ali, Khwaza Khela, Sawat. At the end you will say that. Sawat is the most beautiful area, Switzerland of Pakistan. And the people like you, उस बेचारे को तो बाहर जाना पड़ता है किसी की स्टोरी चोरी करके, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. No, but anyways, that's right. I like your idea. Really good. Just joking. So you can actually be the picture of Pakistan. So for that you have to be confident and then show your area, and people will really enjoy that. Okay, so just be more confident. And the first step is, in order to be confident, the first step is look confident. Even if you are not. Look confident, yeah, that's the first step. Good job, thank you, all the best. Next. Walaikum assalam. Good. मुझे पता है. Okay, चलें अब सुन ले. Next जो है ना, आपने थोड़ी सी इनकी पहले काउंसलिंग करवानी है और उसके बाद इनकी हम प्रेजेंटेशन करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये जा सकती हैं. चलें. Okay. So we have the last 10 to 15 minutes, and we'll do a little bhashan sort of thing. Bhashan, Russian mil gaya hai. Now we'll do some bhashan. Exactly. So usually first there is bhashan, then Russian. होते ना जलसे में जाना है, क्या मिलेगा? बिरयानी. Okay? Okay, yeah, langar ka wasi इंतजामों का. Okay guys, now listen. We'll just talk about English language a little, because now we are going to meet after 2 weeks probably. So yeah, 2 weeks I think. We'll have the next session after 2 weeks probably. Next Wednesday? Okay. So basically, the first thing is you have to be willing to learn English. I'm telling you. Right now, the mobile device that you guys are carrying, that is the best learning resource. I tell you one thing. If I send you today and I say in the next class, you will tell me counting in Chinese from 1 to 5. For example, if I leave you today and I say, okay, in the next class, you will tell me counting in Chinese from 1 to 5. Now you will not go to China to do it. Yeah, somebody says, where are you going? Beijing. Why? I want to learn counting from 1 to 5. Not at all. You will just open your mobile, YouTube, Chinese numbers, and there is somewhere, right? So you can easily learn it. Okay? All the learning is there with you. It's up to you whatever you do. So in the same way,
The first thing is you need to identify your weak areas in English. You just need to see what is my weak area. Oh, I have so many weak areas. Like some serious patients need drip of English. Yeah, those who say, "Mujhse nahi hoga." You first think, and you know, your words become your reality. Your words become your reality. If you're sitting there and say, "Mujhse nahi hoga," andar se awaaz aa rahi hai, "Mujhse nahi hoga," wo waqai nahi hoga. Right? There are some people who say, "Mujhse hoga," main karunga. Something like that. So it should be change your language first. Mujhse hoga, main karke dikhaunga. So then things will be fine. So you should do one thing, try to watch some good talk shows in English. Any talk show of your taste. Like if any of you watch cooking programs, you watch some cooking programs in English. If you watch any talk shows, you can watch them in English. Or if you watch any documentaries, right, try to watch something in English at least for 20 minutes a day. And when you are doing it, you should have the headphone with you or the hand-free with you for the clarity of voice and all that. And the way they speak, let me tell you, this is the beauty of the language. You speak the language like people. You speak the language like the native speakers. So that is possible. You can do it. For that, first of all, you have to take the risk of people. Like you learn English and you pronounce, "This is a cat." And you say it in front of someone, "This is a cat." You say, "Look at him. Cat ko cat keh raha hai." Yeah, it's actually cat. And then you know, people argue. आप चाहे cat बोलो, चाहे cat बोलो, बिल्ली को तो फर्क नहीं पड़ता. फर्क बिल्ली को डालने. Okay? Yeah. So you should focus that standard accent of English. I'm telling you again, you need to live locally, but act internationally, act globally. Right? The potential I see in you, that it does not mean don't benefit your country. Benefit your country. When dollars are going to come, they will come to Pakistan. Yeah, you know what I mean, huh? Wo kidhar gaya YouTube wala? See, when dollars are going to come, dollars will come to Pakistan. But the thing is, whatever you are, you have to become an international product. And in order to become international product, two things are essential. Number one, English. Number two, your communication skills. How you speak English. There are many English people who are very bad at communication skills. I'm going to train a group of British people and I'm going to teach them how to teach IELTS. English people. And they're going to learn from me how to teach IELTS because I know better how to teach IELTS. I'm a non-native speaker of English and I know what are the problems of Asians when it comes to IELTS and all that. So, I mean, my point is, English is something that will take you out of Sawat, Narang Mandi, Saiwal and all that. First, it will take you to national level, right? When I started my coaching career, English language teacher, I was a teacher in a street academy. 4 गलियों के बाद मेरी मशहूरी खत्म हो जाती थी. 5वीं गली में कोई मुझे जानता नहीं था. It started from there. आहिस्ता आहिस्ता इलाके में जानने लग गए. क्यों जानने लग गए? जुमे के बाद मैं खुद पम्फलेट फेंकता होता था कि ही टीचर कौन है ही. ओके, सब कुछ करना पड़ता है. Yeah, you have to do it initially. जब मैंने अपनी एकेडमी बनाई थी अपने ड्राइंग रूम में एंड ऑल दैट, 300 रुपए सैलरी के बाद मैं कहनी मैं अपना कम करांगा, 300 से ज्यादा कमाऊंगा एंड ऑल दैट, राइट? सो कोई नहीं जानता था, करते 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 एंड ऑल दैट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट योर फोकस शुड बी ग्लोबल एंड दिस इज द राइट टाइम and this is the golden opportunity for you all, right? It depends on you. Accept it, embrace it, be happy about it. I will learn English. Every time when you come here, सोच के आए कि आज मैंने इन सबको impress करके जाना है, इनको impress करके जाना है. और उसके बाद पता है क्या होगा? आपका self image, the way you think about yourself, right? वो आपका self image बहुत बढ़ जाएगा. मेरा self image जो है ना, अभी भी वही है. Yeah, you know, but people come and say, sir, हम आपकी वीडियो देखी, सर ये हुआ, सर वो हुआ. But you know, you have to be humble as well. अच्छा ठीक है, and all the things like that. So for that, from today now, you are English language students. You are the students of communication skills. जहाँ से भी कोई पीस मिला, अब जो आप प्रेजेंटेशन आपने तैयार करनी है, उसके लिए थोड़ा सा देखें ज़रा, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करें, कुछ आप फोकस करें कम्युनिकेशन स्किल्स पे, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आई कांटेक्ट क्या होता है, कैसे बोलना है, और जो मैंने प्रोडक्ट लेके आनी है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, राइट? या यूज सूफी कैनोला कुकिंग ऑयल, समथिंग लाइक दैट. ये नहीं है सूफी साहब नीचे पड़े हुए हैं और सूफी भी उठाया नहीं जा रहा, 5 लीटर का डब्बा है, नॉट लाइक दैट.
ओके जिस चीज को आपने बेचना है उसको साथ साथ दिखाना भी है। आप जी बात कर रहे हैं बिस्किट की पब्लिसिटी कर रहे हैं, बिस्किट किधर है? शापर में है, शापर से बाहर निकालो उसको। सो यू नीड टू थिंक कि जो मैं चीज लेके जाऊं, फॉर एग्जांपल आई मीन वी गॉट दिस बोर्ड हियर, इस पे कोई आप पेस्ट कर सकते हैं कोई छोटी सी चीज एंड देन कम ओवर हियर, आई गॉट अ प्रोडक्ट एंड आई नीड टू सेल इट। प्रोडक्ट वो होगा जिसको 4 5 6 लोग कहें कि जी मैंने खरीदना, लड़ाई शुरू हो जाए हैं। मैंने आई डिड द सेम एक्टिविटी आई डिड। उस वक्त मैंने ये किया था 20 रुपीज से। वो नहीं लगता 20 रुपीज में हर चीज, यू नो देयर आर सम शॉप्स, आई डिड दैट। और यकीन करें उस दिन मैं खुद लिफाफा भर के चीजें घर लेके गया था। दैट टाइम माई चिल्ड्रन वर स्मॉल और पैसे दे के खरीदा था मैंने। ओके ये पैसे दे के 20-20 रुपए की चीजें अपने बच्चों को दी, दे वर वेरी वेरी हैप्पी। उसमें कुछ बबल्स थे, कुछ और था, और सब ने बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया था। खाने पीने वाली चीज लाएं तो सोच समझ के लाइएगा, ठीक है? ये ना आप चिप्स लेके आए तो वो बेचारा लिफाफा भी बंद हुआ हो, ये समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक इट शुड बी मोर देन ईटेबल्स ना लाइएगा, कुछ और whatever you want, and I need a very good presentation. Listen, when I say good presentation, it doesn't mean your what do you say outcome of the presentation, only performance. मुझे नजर आए कि आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, yeah, you did your best. Sir, how much time will 1 minute, 1 minute, yeah, 1 minute. उसके बाद आपने दूसरी बस में जाना है, सेल्समैन नहीं होता, 1 मिनट में बात करके फिर दूसरी बार आपको लारी अड्डे लेके जाएंगे। इसके बाद फाइनल जो आपकी असेसमेंट है वो लाहौर के लारी अड्डे में जाके होगी, ठीक है? सुरमा नहीं लेके आना। Exactly. So you can just see, watch some videos and see how to do it and be creative. और again बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बड़े बड़े फ़र्क डालती हैं ज़िंदगी में। छोटी छोटी चीज़ें। मेरा पहली दफ़ा जब नाम ये आया ना तकरीर में, मैंने गैरिजन स्कूल में था एंड वेरी फर्स्ट टाइम मेरे एक दोस्त ने मेरा नाम भी लिखवा दिया। सर ये भी कह रहा है मैं तकरीर करूँ, होते ना ऐसे बदतमीज़ बच्चे, ये सर ये कह रहा है मैं भी तकरीर करूँगा, उसने लिख दिया। मैंने खैर तकरीर किसी से लिखवाई, मेरे अजीज़ टीचर और हाँ साथज़ा इकराम और ये और वो सारा देख के पढ़ना था सारा कुछ। पहली दफ़ा मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे टाइपिंग से लिखा हुआ, मोहम्मद असद याकूब, और मुझे था जैसे नहीं बंदे के लिए कहे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये देख मेरा नाम लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो इन चीज़ों से ना मतलब फिर रेस्ट जो है वो आसान हो जाता है बाकी का काम। जब आपको एक दफ़ा रिकग्निशन मिल जाए, जब आपको एक दफ़ा अप्रिसिएशन मिल जाए, बाकी तो फिर आपको पर लग गए ना। आपने कभी देखा चीलों को उड़ते हुए? नीचे से ऊपर जाने में पर फड़फड़ाने पड़ते हैं, और कभी देखिएगा जो चील ऊपर उड़ रही है अब वो पर नहीं फड़फड़ा रही, अब जो ऊपर की हवा है ना वो उसको और ऊंचा उड़ा रही है, तो वहां पे एफर्ट नहीं है। एफर्ट यहाँ पे पर फड़फड़ाने पड़ेंगे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हाँ मैं मुर्गी हूं, मैं नहीं उड़ सकती, कम ऑन, सबसे होगा। हम लोग इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात, हम हवा में भी उड़ सकते हैं, ज़मीन की गहराई में भी जा सकते हैं। सो इंशाअल्लाह ताला ये पॉजिटिव माइंड, और अभी जैसा कि शाह साहब ने कहा कि आपके लिए एक अच्छा मौका है, यकीन करें बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको दिल से पढ़ाऊँगा, ठीक है? और आप अगर दिल से पढ़ेंगे तो फिर मसला ही कोई नहीं होगा। हैं थोड़ा दिल कितने लग गया है? Yeah, that's the point. Exactly. I like it. So guys, all the best. इंशाल्लाह अनकरीब मुलाकात होगी। अगली क्लास में जब आप आएंगे यही दरवाज़ा होगा, यही जगह होगी, आप मुझे जानते होंगे, मैं आपको जानता हूँगा, और इंशाल्लाह विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लर्निंग दोनों टुगेदर। फन आज जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, मैं बहुत संजीदा इंसान हूँ, ओके ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, ऐसे ऐसे आप लोगों ने शक्लें बनाई एंड वी डिड दैट ऑल राइट। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।